नमस्कार दोस्तों, मेटलर्जी क्यूएन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन का क्वेश्चन। और दोस्तों, आप अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर एक नया नया अपडेट आपके पास पहुंचते रहे। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है द कार प्लॉटेड इन द स्ट्रेस रफ्चर टेस्ट इज ईस्टर्न वर्सेस टाइम, टेम्परेचर, स्ट्रेस या नॉन ऑफ देज। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, नॉन ऑफ देज। द कार प्लॉटेड इन द स्ट्रेस रफ्चर टेस्ट इज ईस्टर्न वर्सेस। सही आंसर है दोस्तों नॉन ऑफ देज। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट इज द स्क्लेरोस्कोप टेस्ट। फैटिग टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, टेंशन टेस्ट या नॉन ऑफ देज। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, हार्डनेस टेस्ट। व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट इज द स्क्लेरोस्कोप टेस्ट। सही आंसर है हार्डनेस टेस्ट। नेक्स्ट है इन ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट द मेजरमेंट ऑफ द डैश इज मोस्ट प्रोन टू एरर। डायमीटर ऑफ इंडेंटर बोल, लोड अप्लाइड, सरफेस एरिया ऑफ इंडेंटर बोल या डायमीटर ऑफ इंडेंटेशन। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, diameter of indentation. In Brinell hardness test, the measurement of the diameter of indentation is most prone to error. Next, in penetrating liquid test for flow detection, the fluorescent penetrant is applied to the test specimen at 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 200 डिग्री सेंटीग्रेड या रूम टेम्परेचर। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, रूम टेम्परेचर। इन पेनिट्रेटिंग लिक्विड टेस्ट फॉर फ्लो डिटेक्शन द फ्लोरेसेंट पेनिट्रेंट इज अप्लाइड टू द टेस्ट स्पेसिमेन एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट है which of the following is not a source of production of gamma rays। कोबाल्ट 60, रेडियम, बेरियम 56 या नॉन ऑफ देज। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, बेरियम 56। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गामा रेज। सही आंसर है बेरियम 56। नेक्स्ट है दोस्तों मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द पिरामिड इन विकर हार्डनेस टेस्ट इज स्टेनलेस स्टील, डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड या रॉड आयरन। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, डायमंड। मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द पिरामिड इन विकर हार्डनेस टेस्ट इज डायमंड। नेक्स्ट है पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। अमाउंट ऑफ ग्रेन बाउंड्री एरिया increase with decrease in grain size. A metal under a constant tensile load will never deform at elevated temperature till the load is varied. Yeah, creep never occurs at low temperature. Yeah, the creep rate is maximum in secondary stage of creep. सही आंसर है ऑप्शन ए। Amount of grain boundary area increase with decreasing grain size. Figure out the correct statement. Say answer A. Amount of grain boundary area increase with decreasing grain size. Next, combine effect of dash is mainly responsible for season cracking of brass. Extremely applied stress and temperature, corrosion and internal stress या एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर या टेम्परेचर एंड इंटरनल स्ट्रेस। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, कोरोशन एंड इंटरनल स्ट्रेस। कॉम्बाइन इफेक्ट ऑफ डैश इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर सीजन क्रैकिंग ऑफ ब्रासेस। सही आंसर है ऑप्शन बी, कोरोशन एंड इंटरनल स्ट्रेस। नेक्स्ट है Which of the following material is the most ductile? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड या टीन। सही आंसर है ऑप्शन सी, गोल्ड।
Which of the following material is the most ductile? सही आंसर है gold. Next, dash hardness test employ a Braille indenter. Brinell, Rockwell, Vickers pyramid या none of these. सही आंसर है ऑप्शन बी Rockwell. Dash hardness test employs a Braille indentor. सही आंसर है Rockwell. Next, dash furnace is employed in the creep test. Reheating, muffle, vertical tube या none of these. सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी vertical tube. Dash furnace is employed in the creep test. सही आंसर vertical tube. Next, pick out the correct statement. The fatigue strength of non-ferrous material is not affected by changes in its temperature. Vickers hardness number is given by the applied load visited by the surface area of the indenter ball. Yeah, the resistance to scratch is measured in Brinell hardness test. Softer material are normally tested on B scale in Rockwell hardness test. सही आंसर है ऑप्शन डी. Softer material are normally tested on B scale in Rockwell hardness test. Next है stress rupture test of a material gives idea about its strain rate. Maximum strain rate at a given stress level या maximum strain rate at a given temperature under constant stress या none of these. सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी none of these. Next, which of the following is the most vulnerable point for notch brittleness to occur in a metallic bar specimen? Point of stress concentration, corner points या mid point of the specimen या a distance of 3/4 of the length of the specimen. सही आंसर है ऑप्शन ए points of stress concentration. Which of the following is the most vulnerable point of notch brittleness to occur in a metallic bar specimen? सही आंसर है point of stress concentration. Next, which of the following is not used for detection of gamma rays and X-rays? Gauger Muller counter, cathode ray, oscilloscope या scintillation counter या none of these. सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी cathode ray oscilloscope. Which of the following is not used for detection of gamma rays and X-rays? सही आंसर cathode ray oscilloscope. Next, pick out the wrong statement. Fine grain metal are stronger and tougher than coarse grain. 1. A scission cracking can be prevented by grain size control by phosphorus addition. A solution used for detection of scission cracking is dilute sulfuric acid. A brittleness at induced in a body due to loss of its capacity to slip when subjected to external stress. सही आंसर है ऑप्शन सी. Solution used for detection of scission cracking is dilute sulfuric acid. Next, which of the following is expected to have the highest fatigue strength among the following? Tin, mild steel, copper या aluminium? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी mild steel. Which of the following is expected to have the highest fatigue strength among the following? सही आंसर है mild steel. Next, by increasing the temperature of a material, its strength increase, ductility increase, strength decrease या both B and C. सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी both B and C.
By increasing the temperature of a material, its ductility increase and strength decrease. Next, which of the following cannot be achieved by adding alloying element to steel? Improvement in high temperature, strength and toughness, improvement of magnetic particles properties, या improvement of abrasion resistance, या none of these. सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, none of these. Next, which of the following is the most widely used hardness testing method on account of being relatively free from human error and speed of determination? Becker pyramid method, Brinell hardness test, या Rockwell hardness method, या Mayer hardness test. सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, Rockwell hardness method. Which of the following is the most widely used hardness testing method on account of being relatively free from human error and speed of determination? सही आंसर है Rockwell hardness method. Next, figure out the wrong statement. Surface and subsurface defect of both the magnetic as well as non-magnetic material can be detected by magnetic particles method. Ultrasonic frequency is of the order of megacycle per second. The fatigue strength of a specimen having rough surface is less than that having a smooth surface. And D, the tensile strength of anneal steel is less than that of the normalized steel. सही आंसर है ऑप्शन ए. Figure out the wrong statement. Surface and subsurface defect of both the magnetic as well as non-magnetic material can be detected by magnetic particle method. Next, the hardness of steel strip sheet is recommended to be tested by the dash hardness test. Rockwell, Becker pyramid, Brinell, या both B and C. सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, both B and C. The hardness of steel or strip or sheet is recommended to be tested by the dash hardness test, Becker pyramid and Brinell. Next, load applied in Rockwell hardness test scale C is dash kg. सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 150 kg. Load applied in Rockwell hardness test is 150 kg. Next, geometrically similar tests were performed similarly. This statement flowing from the Barbas law, definition of endurance limit, Bragg's law, या Kirkendall effect. सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, बर्बास लो. Geometrically similar tests were performed similarly. This statement follows from the Barbas law. Next, parallel length is the tension test, which is the marketed length over which elongation measurement are made is dash the gauge length, equal to, less than, more than, या also called. सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, लेस देन. Parallel length in the tension test, which is the marketed length over which elongation measurement are made, is less than the gauge length. Next, a particular grade of steel with higher strength will have lower scratch hardness, higher hardness, lower hardenability, या both B and C. सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, both B and C. A particular grade of steel with higher strength will have higher hardness and lower hardenability. Next, figure out the correct statement. With decrease in carbon content, steel
its tensile strength increase. Yeah, the tensile strength of the oil quench steel is less than that of anneal steel. Yeah, the tensile strength of steel containing large amount of cementite is more than that having large amount of ferrite. Yeah, D none of these. Say answer option C. The tensile strength of steel containing large amount of cementite is more than that having large amount of ferrite. तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।